Hello everyone. From the moment you wake up and scroll through Instagram or chat on WhatsApp or check Facebook, you are using Meta technology. Meta was founded in 2004 by Mark Zuckerberg as Facebook, and over the years, it has grown into a tech empire. The metaverse. The metaverse. The metaverse. Let's talk about metaverse. Today, Meta owns Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, and more. More than 3.8 billion people use Meta's platform every month, making it one of the most influential companies in the world. Meta is one of the top paying tech companies and one of the 5 companies that come under Mang, and it is the dream destination for every tech and engineering student. And the best part is, Meta is always hiring. Whether you are a software engineer, a data scientist, a UX designer, or an AI researcher, there is a place for you. If you have the skills in coding, AI, design, or product management, Meta could be your next big career move. So how can you land a job at Meta? Watch this video till the end and save it, because in this video you will know how to apply for jobs at Meta, Meta recruitment process, full loop interview process at Meta, and tips from Meta hiring team to prepare for interviews. There are 3 ways to apply for jobs at Meta. First is on-campus recruitment. Meta visits several campuses across the country to hire for technical roles. If your college is one of them, you can participate in the campus drive to apply for jobs at Meta. Another popular way to apply to Meta is through referrals. If you know someone who works at Meta, you can ask them to recommend you for a role. You can also connect with Meta employees on LinkedIn and politely request them to refer you. You can also apply for jobs through Meta career page. To get started, you will need to create a career profile on Meta career page. You will have to add your basic information like name, email ID, and phone number. Once you have created your career profile, then go to jobs section on Meta career page and set the location to India to view all the available jobs in India. जिस भी जॉब रोल में आपको इंटरेस्ट है, आप उस पर क्लिक करो, then check out its job description and eligibility criteria. If the job matches your interest, then you can simply click on apply for the job and fill out the application form. इस फॉर्म में आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करना होगा, एजुकेशन डिटेल्स, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस भी ऐड करने होंगे. उसके बाद आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ्स भी देने होंगे, एंड देन यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन. मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मेटा करियर पेज को थोड़ी देर एक्सप्लोर कीजिए. उसमें बहुत जॉब्स भी हैं, आप जॉब्स टीम वाइज भी सर्च कर सकते हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर टीम में इंटरेस्ट है तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उसमें अगर वैकेंसी है कि नहीं है आप चेक कर सकते हैं. इसके अलावा आप मेटा में इंटर्नशिप्स भी अप्लाई कर सकते हैं. उसके साथ साथ मेटा के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे कि स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड ऑल्सो रोटेशनल प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो आप इन प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ें और एक्सप्लोर करते रहिए. आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी टू अप्लाई एट मेटा. And no matter which way you choose to apply for a job at Meta, the entire recruitment process takes around 2 to 3 months. As you submit your application, the recruitment process at Meta starts. The recruitment process has 3 rounds. In the first round, the recruiters screen your application, and if your resume and profile are shortlisted for the job role, then your interview process will start. The second round is a call with the recruiter. During this call, the recruiter will discuss your work background, job experience, and long-term goals. During this call, you can ask questions to the recruiter about the job role and the work culture at Meta. And at the end of this call, the recruiter will also tell you about the next rounds. The third round at Meta is full loop interview. This interview is designed to assess your technical and problem solving ability. It has 4 to 5 rounds of interviews. Each round in this interview process is about 45 minutes long. These rounds are divided into 3 main categories: coding interview round, design interview round, and behavioral interview round. First comes the coding interview round. As the name suggests, this interview round focuses on your coding skills. You will be assessed on your communication skills, problem solving ability, coding, and your domain knowledge. मेटा में काफी सारी कोडिंग लैंग्वेज यूज होती है, पर आपको सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. बस अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट कोडिंग लैंग्वेज पे फोकस करो और उसकी प्रैक्टिस करो. कोडिंग इंटरव्यू में आपको 2 से 3 प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, जिनके लिए आपको एक सॉल्यूशन सोचना होगा और कोड या एल्गोरिथम लिखना होगा. यू शुड फोकस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक दीज. अब चलिए देखते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कोडिंग इंटरव्यू राउंड में पूछे जाते हैं. यू कैन पॉज योर स्क्रीन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर योर रेफरेंस.
So to prepare for these questions, you can practice coding problems on Lead Code. Plus, I will be sharing some tips from Meta hiring team later in the video. So do not miss and watch this video till the end. After the coding interview comes the design interview round. This round focuses on system design and product design depending on the role for which you are interviewing. System design interview focuses on distributed systems, scalability, performance and efficiency. On the other hand, product design interview focuses on API design, usability and utility. Specifically, the recruiter focuses on these 4 areas. Let's understand this better with an example. So let's assume you wrote a code and there was a bug in it. So firstly, the interviewer wants to see कि आप कैसे approach करते हो. Do you get frustrated or do you break down the issue step by step, like checking for the error messages or reviewing recent changes? Next, the interviewer wants to understand that now that you have identified the problem, what is the plan that you will come up with? Then the interviewer wants to check your technical skills and whether or not you are able to solve the problem with those skills or not. And lastly, the interviewer wants to check whether you can explain your solution clearly to the team. मेटा ने इस राउंड के लिए स्पेसिफिकली एक गाइड दी है वेयर दे हैव लिस्टेड स्पेसिफिक डिजाइन प्रॉब्लम्स फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देम वेल. सो हियर ऑन द स्क्रीन आर दोस क्वेश्चंस. ये एक बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू राउंड होता है और अगर आप ये इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं देन यू कैन स्टार्ट सेलिब्रेटिंग बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड 90% ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस. अब इसके बाद आता है बिहेवियरल इंटरव्यू. ये एक जनरल HR इंटरव्यू होता है जिसमें इंटरव्यूअर आपसे आपके बैकग्राउंड, करियर गोल्स और एस्पिरेशंस के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं. इस इंटरव्यू में हायरिंग मैनेजर आपको 5 की सिग्नल्स या फिर एरियाज के बेसिस पर असेस करता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. ये एरियाज आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और कल्चरल फिटनेस को टेस्ट करते हैं. इसलिए ये राउंड सिर्फ टेक्निकल स्किल्स नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी और माइंडसेट को भी इवेल्युएट करता है. Here are some questions and their answers that can be asked in this round. You can pause the screen and take a screenshot for the future reference. तो ये था प्रोसेस एंड कॉमन क्वेश्चंस जो कि एक मेटा फुल लूप इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम टिप्स जो मेटा हायरिंग टीम ने वेबसाइट पे मेंशन की हुई हैं. फर्स्ट इज रेज्यूमे स्क्रीनिंग टिप्स. द टिप्स इज ऑन योर स्क्रीन. On Meta career site, you can apply for multiple roles, but you can only upload one resume. So make sure your resume highlights skills relevant to multiple job positions. Now let's talk about initial call with the recruiter. This is your first interaction with Meta team, so make it count. Review the job description carefully, highlight your strengths and experience, and prepare questions about the role, team dynamics, and next steps. नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू राउंड दैट इज फुल लूप इंटरव्यू एट मेटा. ये सारे इंटरव्यूज वीडियो कॉल पे होंगे या फिर इन पर्सन. अगर आप वर्चुअली इंटरव्यू दे रहे हो तो हियर आर दी सम टिप्स. प्लीज मेक श्योर यू फॉलो देम. And there is no dress code for interviews at Meta, so you can even wear a t-shirt and jeans for the interview. फुल लूप इंटरव्यू के लिए जो कुछ टिप्स शेयर किए गए हैं वो है कि इन कोडिंग इंटरव्यू यू विल हैव टू राइट कोड्स विदाउट अ कंपाइलर और अ डीबगर, सो यू नीड टू प्रैक्टिस द सेम. यहाँ आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं है बल्कि आपका थॉट प्रोसेस भी शेयर करना है. यू कैन पॉज द स्क्रीन टू लुक एट सम मोर टिप्स. Next is design interview. The most important tip is to ask a lot of clarifying questions to understand the problem in detail before you get into solving it. You can pause the screen to read more tips. Lastly, the HR interview or behavioral interview. The interviewer will ask you questions related to your resume, so make sure that you review your resume and can answer each point in detail. Have a look on more tips yourself on the screen. With that, I come to the end of the video. I hope you found this video useful. Next video, we are working on EY hiring process. So do not forget to like, share and subscribe to the channel so that you do not miss any of these videos. Till then, all the best.